पिता जनकः समानार्थी शब्द अस्ति. सेकेंड नॉट विजिबल. उचितम. उचितं मिस सस्यम. उचितम योग्यम. यस मिस. भूमिः पृथ्वी. भूमिधरा. पृथ्वी चलेगा. पृथ्वी अपि उत्तमस्ति, योग्यमस्ति. मिस एंड द फोर्थ वन. नामधेयम्. अत्र अस्ति फोर्थ वन. मिस व्हाट. नामधेयम्. स्क्रीन पे है, देखो ना, एक बाजू में 1 2, बीच में नंबरिंग किया है, देखो 1 2 3 4 ऐसे दिए है. यस मिस. मिस नामधेयम. मिस कैन वी से नामकरण. नाम. नामयोग्यम. नाम नाम. नाम नाम. एंड मिस फिफ्थ. अवदत्. मिस वदत. वदत तुम. अवदत् इज लंग लकार. स्पोक. टोल्ड. अभाषत. अब्रूत. अभणत. अभणत. many words we have. देखो सेकेंड लेसन है ना, सेकेंड लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ड सेड, टोल्ड. उसमें बहुत सारे वर्ड है. अवदत, अभाषत, अभणत, अब्रुत, आह. ओके नेक्स्ट. श्रेया. यह श्रेया. नेक्स्ट 5 6 7 8 यस 9 10. मिस. भाषा वाणी सूर्यः भानुः अवगतं ज्ञातं तुरगः अश्वः सुवर्णं कनकम्. वेरी गुड. भाषा वाणी सूर्यः भानुः अवगतं ज्ञातं तुरगः अश्वः सुवर्णं कनकम. यस देवांश. नेक्स्ट 5. मूर्खः मूढ़ः सरित का नदी पादपः वृक्षः. 14th वन नहीं, स्किप हो गया है. 15th वन बोलिए. अम्बः गगनम. अम्बः इज जलम, वाटर अस्ति. और कर्पकः नहीं पता. कर्षकः. कर्षकः. कर्षकः कृषिवलः. कृषिवलः. उत्तमम्. यस. नेक्स्ट वन नुपुर. सेवेंटीन फ्रॉम 7. दक्षः सज्जः. मार्गः. मार्गः पन्ताः. पन्ताः. विद्वान्. विद्वान. आप लोग के सबके नाम लिखने चाहिए वहां पे. हाँ, आप लोग इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे, आप सब लोग विद्वान हो. पंडितः. पंडितः. रतः आई डोंट नो. रताः. मग्नाः. रताः एनग्रॉस्ड. मग्ना. मग्नाः. लीनाः. वेरी गुड. यस. नेक्स्ट वन देवांश. देवांश डन. नो. यस देवांश. वेरी गुड नुपुर. मैंने बोला मिस. ओ बोला आपने. ओ सो सॉरी. नेक्स्ट वन देव प्रणव. अरे वेर इज देव प्रणव. आप देव प्रणव क्या गेम खेल रहे हो क्या? छुप लपा छुपी खेल रहे हैं? हाँ, हैंड रेस करे बोल. फॉरन चुप रहे हो. रेज हैंड अगेन देव प्रणव. यस. अनम्यूट. मिस यू मेड मी अनम्यूट. ओ नहीं, वो भी हो गया. आप म्यूट हो जाइए. ओके मिस. 11th वन. 21 से लेके 25 तक. शीघ्रम. शीघ्रम माहित नाही मिस. शीघ्रम सत्वरम. शीघ्रम सत्वरम. 22 संहतिः. यूनिटी. संहति. यूनिटी. यूनिटी मैंने इंग्लिश में बताया. हाँ, एकत्र. एकता. 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 उसके बाद कालक्षेपः. कालक्षेप मिस मला सगळे डिफिकल्ट. अच्छा, आपको डिफिकल्ट. आपने हैंड रेस किया पहले, मुझे लगा आपको आ रहा है, आप डर रहे बोलने के लिए. कोई बात नहीं. शीघ्रम सत्वरम संहतिः एकता, उन्होंने बताया है. देन
कालक्षेपः कालापव्ययः रासभः गर्दभः रासभः मीन्स डोंकी सो गर्दभः एंड मनः मनः, चित्तम चित्तम yes चित्तम very good चेतः Dev. Chetah very good yes who will be the next आगे के आंसर यश कैन यू ट्राई यश कैन यू ट्राई द नेक्स्ट वन नो so again Shreya yes Shreya Yes, Miss. Miss, can you tell the number? Actually, it was we were going 26 26. वार्धक्यं वार्धकं ज्ञातम् अवगतं भयं भीतिः पंडितः प्राज्ञः शिरः मस्तकम्. एक मिनिट वार्धक्यम वृद्धत्वम Okay. वार्धकम नो वृद्धत्व एंड लास्ट वन इज शीलः चारित्र्यः शिरः अस्ति वा that word शिरः in your pdf okay शिरः मस्तकम yes yes विरुद्धार्थक शब्दः अधुना विरुद्धार्थक शब्दः yes देवांश first 5 स्तुतिः निन्दा सद्गुणाः दुर्गुणाः प्रसन्नाः निराशाः खिन्नाः अशक्ताः सशक्ताः सदृढाः और कृशाः तुन्दिलाः कृशाः तुन्दिलाः पीवराः स्थूलाः स्थूलाः पीवराः many words we have yes next one yes Aditya Miss from where? from where so, 6 1 right? right Maitri Shatruta Dhrudah. It's not able to. दृढ़ means tight so शिथिलः Yes. शिथिलः Baddhah. बद्धः मुक्तः Yeah. Muktah. Videshah Swadeshah Prachannam Prakatitam. बस very good yes next one yes next Vaishnavi next Miss from Alpam. from 11th Okay. Alpam. We can say Swalpam. No. अल्पम मीन्स स्वल्पम अल्पम का मीनिंग स्वल्पम है ऑपोजिट विरुद्धार्थक Bahu. बहु वेरी गुड Nindantu Stuvantu. साधवः दुर्जनाः रोहणम् अवरोहणम् and विपुलम् अल्पम् वेरी गुड नेक्स्ट वन यस वैद्य निपुर नुपुर Yes, miss. सद्गुणाः दुर्गुणाः क्रेतुं विक्रेतुं प्राचीनः नूतनः उत्साहः miss I don't know of उत्साह निरुत्साह उत्साहः निरुत्साह समाप्य miss I'm not समाप्य आरभ्य समाप्य means after completing आरभ्य after beginning yes, miss. you one mistake you have done that is prachinah you said prachinah but the question is prachinaha so prachinaha nutanaha yes very good yes devansh ने बताया ना बहुत सारे आंसर हार्दी श्रेया where are you
उत्साह अनुत्साह, यस वराली यू आर राइट, उत्साह अनुत्साह अपि चलति, अनुत्साहः निरुत्साहः, yes Shreya, next 5 Miss from from 21. 21. Hmm. उपकारम् अपकारं विस्मृत्य स्मृत्वा प्राक् अनन्तरं पुरतः पश्चात् कृशः Miss, I'm not able to. पुरतः पृष्ठतः, Miss, can I write पश्चात्? न पुर किसका, प्राक का कि पुरतः का? पुरतः. नहीं, पुरतः इन फ्रंट ऑफ ना, तो Okay. पृष्ठतः। और And Miss आप कृशः? कृशः मीन्स थीम, No, Miss, opposite. अच्छा ऑपोजिट, स्थूलः, स्थूलः। Okay. पश्चात यू कैन राइट फॉर प्राक, श्रेया, पश्चात वर्ड यू कैन राइट फॉर प्राक, प्राक अनंतरम पश्चात, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, यस नेक्स्ट वन, एक मिनट, हाँ यस आदित्य, नेक्स्ट वन। निर्धनः धनवान्, पंडितः मूर्खः, उत्सुकः अनुत्सुकः। मिस नेक्स्ट वन नॉट एक विजिबल। मित्राणि, आई थिंक मित्राणि अस्ति, एक मिनट, हाँ नहीं वो नहीं हो रहा है, स्क्रो, हाँ मित्राणि, यस। शत्रवः एंड क्रेतुम विक्रेतुम। Very good, very nice. So here we have completed Samanarthak Shabdaha and Viruddharthak Shabdaha. Is there any doubt in any word? Any word which you don't understand? कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं समझा आपको? Please ask me now. Forum, no, not at all. In exam, words from outside the textbook will not come. एग्जाम में नहीं आएंगे, टेक्स्ट बुक के बाहर के नहीं आएंगे। टेक्स्ट बुक मतलब एक्सरसाइज और लेसन के बीच में से। टेंथ का बाय हार्ट कीजिए रिद्धि, ट्राई टू बाय हार्ट दी अमर कोश ऑफ 10th स्टैंडर्ड। आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में 8 और 9 का मिलाप दिया है, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 एंड 9 स्टैंडर्ड। ओके, now next is nijantam kuruta, causal, causal, let's discuss the rule for causal। चलो निजंतम कुरुता के लिए रूल, रचित आर यू रेडी टू नोट डाउन द रूल्स? or you already know these rules? Nijantam kuruta. Now nijantam means causal, हाँ, someone caused to do action, हाँ, और वो जो causal है, the one who cause, the one who forces to do that action is given in the bracket after completing that sentence. For example, first sentence, vrukshah patati, the tree falls, because of what? Prabhanjanah, because of the high storm, so यहाँ पे प्रभंजन is the cause। तो जो जो cause दिया है ब्रैकेट में वो हमें as a subject यूज करना है at the beginning of every sentence, और वो प्रथमा में यूज करना है। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे जो जो वर्ड ब्रैकेट में दिए हैं वो सब प्रथमा में ही दिए हैं, सो हमें वो as it is यूज करने हैं। Then the subject which is already given in the sentence we have to use as an object. That means we have to use it in the dvitiya vibhakti, so we have to add to that word. For example, vrukshah vruksham, andhakara andhakaram, chhatrah chatram, krishnah krishnam, like this. And the verb will change according to the rule given on page number 94.
93, 94 of your textbook. Do you have textbook with you now? चलो मिला? Yes, देवांश? मैं मिस आंसर करने के लिए क्या आंसर था? के लिए होगी, चलो टेल मी द फर्स्ट आंसर. प्रभज्जनः वृक्षं पातयति. प्रभञ्जनः वृक्षं पातयति. पतति will become पातयति. Very good. Next one, yes, Aditi. Next one, second one. सूर्यः अन्धकारं न्यस्यति. नश्यति will become नाशयति. ओके मिस. Nashyati will become nashayati. The rule for kriyapad. The rule for kriyapad is dhatu plus aya plus ti. Patati, patayati, nashyati, nashayati, pravishati, praveshayati, bhunte, bhojayati. Like this. Divya, yes Divya, third one. रक्षकः छात्रं प्रविशयति. प्रविशयति न प्रवेशयति. प्रवेशयति. You have to note down the changes of kriyapad. Next. Yes, Vaishnavi, fourth one. यशोदा कृष्णं नवनीतं भोजयति. Yes, bhungte will become bhojayati. Yes, Isha, next one. मैम अदिति. Aditi, हो गया Aditi. Tell me the next one. यस मैम. द्रोणाचार्यः अर्जुनं शस्त्रविद्याम् अध्यापयति. द्रोणाचार्यः अर्जुनं शस्त्रविद्याम् अध्यापयति. Adite will become adhyapayati. Very good. Yes, Dev Pranav. Next one. रसिकः काव्यं श्रावयति. कविः रसिकः काव्यं श्रावयति. एक मिनट है देव प्रणव, डोंट म्यूट. कवि ही आपने बराबर यूज किया. व्हाट विल हैपन विद रसिकः? रसिकः No, we have to change it into रसिकम्. द्वितीया. हाँ. Now repeat. कविः रसिकं काव्यं श्रावयति. Very good. Shrunoti will become Shravayati. Yes, Shreya, next one. Yes, miss. मेघः यक्षेण संदेशं नाययति. Very good. I know. मुझे लगा था कि आपने ये आंसर बराबर देंगे. Nayati. Now students, please write down the rule for ni naya dhatu. Dhatu ni naya, dhatu likha. For dhatu ni naya and for dhatu likha, the subject which is already given in the sentence will take tritiya vibhakti. जैसे उन्होंने कहा, श्रेया ने कहा, मेघः यक्षेण संदेशम नाययति. यहाँ पे यक्षम यूज नहीं किया है, यक्षेण. So in case of 5 धातु, नीनय, लिख, रुहर, then गा धातु, गा, done. Next, रुहर, नीनय, क्रू के लिए भी क्रू, वापस बता दो, क्रू, रू, नी, देन लिख एंड गा, गापयति. नेक्स्ट,
Yes, Vakalli. Yes, Vakalli, please. Next one. 8-1. Hello, miss. Yes, 8-1. पुत्रम पत्रः लिखित लिखित देखिए आपकी यहाँ पे बहुत शोर है लग रहा है. And you use the word given in the bracket. Use the word given in the bracket as a subject. Yes, Vakalli. Use the word given in the bracket as a subject. Yes, miss. Pita. पिता पुत्र Pitaha na pita. Pitaha na pita. पिता पुत्रम पत्र लिखितः. Just now I told you that लिखा धातु जहाँ पे भी जिस सेंटेंस में लिखा धातु आएगा वहां पे given subject will changes into तृतीया विभक्ति. पुत्रेण. पुत्रेण. Okay, miss. हाँ, पिता पुत्रेण पत्रम लेखयति. Please note down the answers, Vakalli. Yes, Shantanu. Next one. कविः राजां काव्यं श्रावयति. Shantanu, what is Dvitiya of Raja? What is the Dvitiya Vibhakti of Raja? Rajan word. The मूल शब्द से राजन. Yes, आदित्य बराबर. शंतनु आप वापस अनम्यूट करके बोलिए. राजानं. Rajanam. So now please repeat the answer. कविः राजानं काव्यं श्रावयति. Very nice, very nice. Yes, next one. Anyone else? Last one. But I want new students. Same students hand raise कर रहे हैं. Shravya Shetty from Andheri Chandivali. Please unmute. Shravya Shetty? No. Yes, ma'am. Yes, please. Hello, Shravya. 10th one. Yes. Shri Ramachandrah Dashananam Swargam Gamayati. Very good. आपको डाउट है गमयति में? गमयति आपने ऐसे पूछा. ओके. सो श्री रामचंद्रः दशाननं स्वर्गं गमयति. यस आदि. राज्ञा इज तृतीया. नेक्स्ट. निजंतम निष्कासयत. दैट्स वेरी इजी. निजंतम निष्कासयत. रूल्स फॉर निजंतम निष्कासयत. फर्स्ट रूल, रिमूव द गिवन सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट दिया है सेंटेंस में उसको निकालो. देन सेकेंड सब्जेक्ट जो है, मतलब जिसको हम कहेंगे एजेंट, जिससे एक्शन करवा जा रही है, वो एजेंट को हमें प्रथमा में करना है एज अ सब्जेक्ट. ओके. सो सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट will become agent. Second subject will become main subject. Next, the last action should be written in simple form. The last action should be written in simple form. Yes. First sentence में खादयति चाहिए था. बालकः शुकं फलं खादयति. Yes, what will be the answer, Aditi? शुकः फलं खादति. शुकः फलं खादति. Very good. Yes, Vaishnavi, next one. गणेशः महाभारतं लिखति. गणेशः महाभारतं लिखति. Yes, Riddhi, third one. मिस चालकः नियमं जानाति. Very good. चालकः नियमं जानाति. Yes, Kanak. मृगः क्षेत्रं दर्शयति. दर्शयति में मूल धातु दृष्पश्य. दृष्पश्य.
खलु धातु अस्ति पश्य. पश्यति मृगः क्षेत्रं पश्यति. वेरी गुड. देव प्रणव. मिस भुवनमण्डलः प्रकाशते. प्रकाशते. भुवनमण्डलः प्रकाशते. वेरी गुड. नेक्स्ट. Thank you, miss. नेक्स्ट वन. यस देवांश. रात्रिः धातु जो है या है. या धातु जो है उसको पय लगा है. अयात् अयात. वेरी गुड. अयात. पय निकालो. हाँ, पय इज अ साइन फॉर निजंत. निजंत निकालते वक्त पय निकालना है. सो रात्रि ही अयात. नेक्स्ट. यस अदिति. नेक्स्ट वन. यस अदिति. नेक्स्ट वन. सैनिकाः मां देशभक्तिकथा स्मारयति. यस दिव्या. अहं देशभक्तिकथाः स्मरामि. Very good. Mam changes to aham. Deshabhakti katha will remain same and smarayati will become smarami. Very nice, Divya. Next one. Yes, Aditi. Next one. Yes, Aditi. Next one. आपका आवाज नहीं. बालकः अन्नं भुङ्क्ते. बालकः अन्नं भुङ्क्ते. Very good. Yes, Aditya. Next one. वृक्षं वर्धति. वृक्षं न. वृक्षः वर्धति. वृक्षः वर्धते. वर्ध धातु जो है वो आत्मनेपद है. वृद्ध वर्ध. हाँ, आत्मनेपद. एक प्रथम गण आत्मनेपद. सो वर्धते. वृक्षः वर्धते. यस रिद्धि. नेक्स्ट वन. सुदः अन्नं पचति. बराबर. सुदः अन्नं पचति. नेक्स्ट. सो इज देयर एनी डाउट इन निजंतम कुरुत एंड निजंतम निष्कासयत? For 6-1, in answer 3 will be Halanta. Shreya, what is your doubt? Please tell me. Ask me a doubt orally. Yes, miss. Miss, can you please repeat the 10th sentence? Gruhini. Gruhini Sudena Annam Pachayati. Sudena will become Sudah. Okay. Sudah is Miss, what about the verb? Pachati. Pachayati में पच धातु है. Pachati. Okay, miss. Sudah Thank you. Annam Pachati. Yes. Okay. Ma'am, can you please tell the answer of 7th one? Yes. Sainikaha mam deshabhakti katha smarayati. Now here the subject, second subject is mam. Mam will become aham. So aham deshabhakti katha smarami. Aham asti uttam purusham ekavachanam. So smarayati will become smarami. संभाषपत्रम करना है. पेज नंबर 94. What is sixth answer? Sixth, sah ratrim ayapayat. Sah will be removed. Ratrim will become ratrihi. And ayapayat will become ayat. Ayat. Yes, Rachit, 94 पेज पे निजंतम का संभाष पत्र में all those sentences are given in this assignment. We have discussed already. Do you have any doubt in specific question, specific sentence? Rachit, do you have any doubt in those sentences? No. Okay. एक minute. What is the meaning of? Someone asked me some meaning. Ayapayat. Ayapayat means spend. Spend. He spent that night. Ayapayat.
Ya means go, and yapayat means spending. Ninth one, please. Balika vruksham vardayati. Balika will be removed. Vruksham will become vrukshah. Vardayati will become vardate. Because the मूल धातु is vrudvarda. एक प्रथम गण आत्मने पर. So it will become vardate. Yes, Vakalli, do you have any doubt? I have doubt in Karaka. What doubt in Karaka? Yes, Vakalli, please raise your hand. Sudha means cook, chef. Gruhini means a lady, the owner of the lady. Owner of the lady means the owner of the house. Main Gruhini means Gruhastha. Gruhastha means the owner of the house. And Gruhini is wife of Gruhastha. So Gruhini, housewife बोल सकते हम लोग. So Gruhini, the housewife. Sudena, by chef, from chef. Annam pachayati. खाना जो है बना के ले रही है. एक मिनट श्रेया. Yes. Hello, Miss. Yes, Shreya. Miss 1 minute. Miss, in the word ashrunot, the sh is there or shra is there? Ashrunot. Yes, Miss. Shra. Okay, Miss. Why? No, Miss, I just asked. I wasn't getting it. Ashrunot. Shru asti. Shra. Okay. Thank you. Welcome. Any other doubt? Okay. What is Karaka? What is Karaka? Who will tell us what is Karaka? Karaka means the function of all vibhaktis. Please note down if you don't know this Karaka. Karaka means the function of all vibhaktis. For example, Prathama vibhakti. Yes, Shreya. Yes, Do you have doubt any regarding any Karaka? No, Miss, not Karak. I have another doubt. Puchi? Can I? Yes. Miss, in Pratyashrunot also, sh is there, right? Or shra is there? Shra. Okay. Okay, Miss. Thank you. Welcome. Okay. Now, the function of all vibhaktis is known as Karaka. For example, Prathama. Prathama vibhakti is used to indicate subject. So, Prathama ka Karaka hai karta. Dvitiya vibhakti is used to indicate object. So, Dvitiya ka Karaka hai karma. Very good, Aditi. Very good, Shreya. Very good, Varun. Then Tritiya. Tritiya vibhakti is used to indicate instrument. So, Tritiya ka Karaka hai karanam. Chaturthi vibhakti is used to indicate receiver and listener. So, uska Karaka hai sampradanam. Then Panchami ka Karak hai apadanam. Because Panchami vibhakti is used to indicate separation, movement. Then Shashti Sambandha Saptami Adhikaranam. Yes. So this is Karaka. Who had doubt in Karaka? कोई तो पूछ रहा था. I have doubt in Karaka. What is his doubt actually? So Karakam Likhata. Karaka Parichayam Kuruta. ऐसे सवाल आता है. We have question in apathit paragraph, apathit gadyansh, that is Karaka Parichayam Kuruta. And in that question, they will give us one sentence and they will underline one word. We have to identify the Karak of that underlined word. Yes. Kim Abhavat? Varuna, but just a moment, Varuna. For example, Balakah Kandukena Khelati. And if the underlined word is Kandukena, then what will be the Karaka of Kandukena? Who will tell us?
Yes, Nupur. Miss, please repeat. बालकः कन्दुकेन खेलति. Kandukena is underlined. Karanam. Karanam, exactly. Yes. Miss. Kandukena is instrument, so it is Karanam, Tritiya. So we have to mention there. Kandukena ब्रैकेट में लिखिए तृतीया विभक्ति और फिर ब्रैकेट कंप्लीट करके लिखिए कर्णम. यस, हु इज अनम्यूट मी? वैद्य. यस, यस नुपुर. ओह, सो सॉरी. प्लीज अनम्यूट अगेन. Miss, I actually handed out in Vachya Parivartanam. I'm not getting how to do it from active to passive and passive to active. ओके, विल डू दैट टॉपिक अगेन ना. हम लोग ने वो टॉपिक लिया ही नहीं आज. विल डू टुमारो. Miss, yes, Miss, thank you. हाँ. Yes, 1 2 3 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1. What is this? Okay, Vacham shortcut. Okay. Don't confuse. Don't make confuse. Wait. चलो अभी और any doubt? Varun, please raise your hand and ask me that question again orally. हाँ, वरुण का सवाल है, प्लीज. हाँ, सब लोग सुनिए. अत्र एव रथम स्थापय निजंतम निष्कासयत्. Yes, Shreya wants to try. Yes, Shreya, please. Yes, Miss. Can I? Yes. Ratham tishtha. Miss, what is that first? Atra eva will remain. Atra eva will remain as it is. Atraiva ratham tishtha. Atra eva ratham tishtha. Miss, it is correct. What do you think? It's correct? Yes, I think it is correct. Rathaya. Look at the word. No, Miss. Ratha. Look at the word ratha stapaya. Na ratham stapaya. Yes. Ratham is object. रथम इज ऑब्जेक्ट. यहीं पे रथ रुकाओ. हाँ, रथम इज ऑब्जेक्ट जो आपने सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज किया. अत्र एव रथः. हाँ, स्थापय इज लोट लकार. श्रेया. Yes, Miss. हाँ, सो स्थापय इज लोट लकार मध्यम पुरुष एक Yes. वचन. Yes, Miss. So I also use the लोट लकार तिष्ठ. यस. सो रथ का क्या होगा लेकिन तिष्ठ? सॉरी, रथ का ये क्या हो गया? रथम कैसे आएगा? रथः. हाँ, रथः. Yes, Miss. हाँ, अत्रैव रथः तिष्ठ. Okay. वेरी गुड. नेक्स्ट. स्थापयति कसं येणार वरुण? स्थापयति नहीं आएगा ना. स्थापयति is causal form. स्थापयति is निजंत form. We have to change it into simple form. So तिष्ठ. She has used correctly. स्था तिष्ठ. Okay. Any other doubt? Okay, next. Tomorrow we'll do Vacham, then Lakar Parivartan, Vachan Parivartan and writing skill. Shreya, do you have more doubt? Shreya, do you have any doubt? No, okay. So we are going to stop here. Shvah Punarmilamah. Till then, Namo Namah.